हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है क्यों पूरी दुनिया को लाजमी इंडिया को विजिट करना चाहिए। आज इंडिया के फैक्ट ऐसे देखेंगे जिसको सुनकर आपको भी, मैं कहता हूँ 100% दिल कर जाएगा कि आप इंडिया विजिट करो। और मतलब पूरी दुनिया, ये एक फॉरेनर की वीडियो है, प्रोजेक्ट नाइटफॉल, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये इंडिया के फैक्ट बताते हैं और लोगों को मतलब कहते हैं कि लाजमी विजिट करो इंडिया। इंडिया अपने आप में एक, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया है, अलग दुनिया। तो जल्दी देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। No, I want real India. Poor people, hungry people. Dirty. India is one big slum. And even Einstein was said to believe stupid. Is India really a bad country? Are Indians really who some think they are? Or has the world been unfairly judging them all this time? People like very disaster. I don't like India. Night fam. Today we are doing this special video for a special country close to my heart. Because it's time to destroy the misconceptions that even you might have in your mind. This is what the world got wrong about India. First things first, let me remind you that we are talking about the second most populous country in the world. A massive 1.4 billion population, bigger than most continents. So it shouldn't be a surprise that there is no other country more diverse than India. And within that massive population, definitely there are geniuses born. I mean, what if I told you that you are able to use your internet and your phone right now because of an Indian scientist? Yes, you have to thank the supposed forgotten father of wireless telecommunication, Jagadish Chandra Bose. And to many people's surprise, there are so many more important inventions that came from India. The number 0 buttons, shampoo, cataract surgery, Ayurveda medicine, the USB, the Pentium chip, candied sugar, yoga, even the inspiration for snakes and ladders. The list is definitely much longer. So, for those who believed even for 1 second that Einstein's observation that Indians are stupid was true, tell them that the world's tech giants prefer Indians to work for them because they are highly skilled in science, technology, and engineering. In fact, in 2016 alone, India produced 2.6 million technology graduates. And that is not the end of it. Do you realize that today's biggest technology giants in the whole world right now are run by CEOs from India? Google, Microsoft, Twitter, Adobe. Indians are right there at the very top making world-changing decisions. Which is why it's quite sad that some people still think India is 100% poor and underdeveloped, that it's just slums. You know, when most people think of India, they think of poverty, they think of streaming people, they think of Gandhi. They're all just thinking that India is one big slum, which is not true. By 2030, it is estimated that 80% of Indians will belong to middle class. And perhaps the most common stereotype of them all is that Indians are dirty and chaotic. I mean, just look at how this woman treats her Indian neighbor. In East Indian, colored skin, go back to your country, man. Or listen to the harsh comments of this American diplomat about a certain Indian ethnic group. And my skin became dirty and dark like the Tamilians. This comment is 10 years old, but the unfair stereotype remains until today. In 2022, we need to come together and put a stop in judging entire nations based on only negatives. It is lazy, it is insulting, and it is unfair. Now, of course, it's very important to say that like any other country, India is not perfect and there will always be things that need help, that need to improve. But those negative traits should not make us forget that India is the land of diversity, of a culture so rich and colorful, of people so kind, friendly and genuine.
सोच में भी नहीं रखते होंगे कि कहीं Just like recently we made a video about Africa, it's time that the world opens their eyes to the positives of India, because they are thriving and they are very much capable of progress. For all we know, with 1.4 billion Indians coming together in a few years' time, India might be on its way to becoming a global superpower. And I will close this video with an observation I have after covering some topics from India. Unfortunately, I've noticed that whenever any type of video is made about India, some people will comment negative things. It's like they are incapable to acknowledge the positives and they focus only on the negatives, and they call me, oh, I didn't do my research or anything like that. Once again, I fully acknowledge that there are issues in India just like there are issues in Africa, because we just recently made a video about African stereotypes. It doesn't matter that there are issues. We cannot always complain and focus only on the negatives. There is no progress if you only focus on the negatives. And we here at Project Nightfall have many times covered things that are very difficult, that are very negative. This time, once again, this video is to preach and celebrate India, and I hope that you will join me in this video by sharing. इसी के साथ यार वीडियो खत्म यार, इसमें कोई शक नहीं है। आज से पहले अभी तो ये चीज़ बहुत कम हो गई है। मैं कहता हूँ कुछ साल पहले आप जाओ तो हर चीज़ इंडिया के बारे में BBC, CNN, फॉक्स न्यूज़ जो पकड़ लो यार, हेट ही फैला रहे होते थे। इंडिया में ये है, इंडिया में वो है। फॉरेनर्स आते थे, वो स्लम्स दिखाते थे। फॉरेनर्स आते थे, वो कहीं गलत जगहों पे घुस जाते थे और इंडिया की गलत चीज़ें पूरी दुनिया को पोर्ट्रे की जाती थी और पूरी दुनिया यही सोचती थी कि इंडिया सही कंट्री नहीं है। असल में लेकिन आज देखो टोटली चेंज हो गया। इंडिया ने अपने दम पर कार दिखाया। आज इंडिया के पास हाईटेक सिटीज है, आज इंडिया के पास हाईटेक रेलवे सिस्टम है, आज इंडिया के पास स्मार्ट सिटीज है। कैसी कैसी भाई, ऐसे ऐसे मॉल्स, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि वो आईटी में इंडिया इधर कहाँ चला गया आपका अंदाजा नहीं है। $250 बिलियन तो साल के आईटी से सेल हो रही है, मतलब इससे भी अब ज्यादा हो गई होगी। तो अब वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स पूरी दुनिया को हैंडल कर रहे हैं इंडियन। आज पूरी दुनिया की वो नजरिया बदल रहा है। सारी बातें छोड़ो, अगर इंडियंस जो लोग समझते हैं, अब तो बहुत कम रह गए जो लोग पहले समझते थे या जो कुछ भी है। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। सिर्फ इंडिया मेडिसिन, फूड, ये चीजें सिर्फ दुनिया की रोक देना तो उनको अकल ठिकाने आ जाएगी। मसाले, मेडिसिन, ये खाने पीने की चीजें वो भूख से मार जाएंगे। ये कंट्रीज भूख से मार जाएंगे। इंडिया के और जो लोग ये बोलते हैं ना इंडिया के बारे में कि इंडिया बुरा है, ये है वो, 2030 तक 80% लोग जो है ना मिडिल इनकम में चले जाएंगे। अमीर मतलब हो जाएंगे, एक तरह अमीर हो जाएंगे। मिडिल क्लास जिनके पास पैसा होता है, मतलब गाड़ी वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उधर चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और क्या चाहिए यार। वो ऐसे कमीने लोग जो ऐसी बातें करते हैं, उनका तो देश 200 250 साल से मतलब इस तरह करके तो डेवलप हुआ है। इंडिया के 75 साल है, खंजर पीछे से मार के डेवलप हुआ है। 75 ईयर जो है इंडिया जो है ना अभी कर रहा है, और फिर भी किस लेवल पे चला गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो दूसरों को लूट के कहां से नहीं लूटा। कौन सा ऐसा देश है जिसको मतलब अमेरिका ने नहीं लूटा? अमेरिका देख लो, जंगे करवाता रहा, कितने देशों में सारा कुछ करता रहा। अच्छा, यूके को देख लो, जर्मनी को भी, फ्रांस को देख लो, हर कंट्री ने किया, सब कुछ किया। वो तब ये बातें याद नहीं रखते। चाइना को देख लो, ऐसा कोई देश नहीं जिसको उसने नहीं ठगा उसने। ऐसा कोई नहीं ठगा जिसको चाइना ने नहीं ठगा। उनको तो मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए अगर वो इस तरह की। और भारत पीसफुल कंट्री है। जब महामारी आई थी पूरी दुनिया की भारत ने मदद की। तब बड़े अमीर देश जो अपने आप को कहते हैं ये साइड पे हो गए थे, अपने देशों की खाली सोच रहे थे। और यार जीरो ही ना होता तो इनको क्या होता है, ये क्या कर लेते। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह वाले जो फादर थे जिनका बोल रहे थे, अगर वो ये सिस्टम सारा कुछ न करते। सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इन्होंने मतलब निकाला था। ये सिर्फ ये चीज नहीं सोच रहे कि अगर इंडिया ये चंद चीजें भी ना देता ना इनको, तो इनके और आदिवासियों की जिंदगी गुजार रहे होते भाई। अमेरिका। ये आइंस्टाइन कौन सा सस्ता नशा करता था बे? तभी तो उड़ते हुए बालों वाला था, उसने जो है ना सारा कुछ किया। मुझे उसका नहीं समझ आई, आइंस्टाइन को कौन सी बकचोदी इसमें लगी। यार देखो, ये थिंकिंग इन लोगों की इतनी घटिया थी ना, ये शुरू से इसी तरह करते हैं। जो देश आगे जा रहा होता नहीं उसके बारे में इसी तरह ही बोलते हैं। इंडिया कितनी तेजी से आगे जा रही है उसके बारे में मतलब डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया मतलब। लेकिन मैं एक चीज यही समझता हूँ,
दुनिया बोलती रहे, जो मर्जी करती इंडिया रहे, तरक्की करता इंडिया रहेगा। अपने काम से लोगों को बताएगा कि हम जो है ना सुपर पावर है, हम जो है ना ग्लोबल पावर आपका बनते जा क्या रहे हैं। कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।